Hello dear students, welcome you all in online classes of Bishop Academy. Students, in the previous lecture, we had already discussed about the force on charged particle moving in uniform magnetic field. Now, we are going to discuss about how do we find out the direction of that force acting on that charged particle. So there are two basic rules. There are two basic rules by the help of which we can easily find out the force on easily find out the direction of force acting on the moving charge particle in uniform magnetic field. First one is Fleming left hand rule. What is Fleming left hand rule? Fleming left hand rule indicates that when we stretch the thumb and first two fingers of our left hand such that the forefinger is directed towards the direction of magnetic field and central finger directed towards the motion of positive charge of the motion of electric current, then thumb indicates the direction of force acting on that charge particle. Come here and try to understand what I am trying to say. Suppose that there are this is three mutual perpendicular axes x, y, z in which a positive charge moving with velocity v along the direction of x-axis. If positive charge moving along the direction of x-axis, then the direction of current flow is also, we know that the direction of current is along the direction of flow of positive charge carrier. So here the direction of positive charge or the direction of current is given along x-axis and magnetic field directed towards y-axis. Magnetic field directed towards y-axis. Then what is the direction of force acting on this charged particle? We have to find out. So according to Fleming's left hand rule, stretch your thumb and first two fingers mutually perpendicular to each other, such like this. And if the forefinger represent the direction of magnetic field and middle finger represent velocity of positive charge or direction of current, then thumb indicates the force acting on that charged particle, such like this. We can easily summarize this FBI or FB, and this is the velocity of positive charge. इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे आप, ऐसे अगर आपको देखना है तो ठीक है। तो ये फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और ये क्या होगा, करंट और वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. So we can write FBI. With the help of this, we can easily find out the direction of force on this positive charge. What is the direction? Stretch your finger or three fingers of your left hand such like this, mutual perpendicular. So velocity or current, velocity of charge carrier are given along x-axis. So central finger indicates along x-axis and forefinger indicates along y-axis. Then you can easily see thumb indicates along z-axis. So direction of force is along z-axis. This is your direction of force. So इसका जो भी इसका स्टेटमेंट है वो बुक में दिया होगा, आप लोग नोटबुक में कॉपी कर लेंगे. तो ये स्टेटमेंट होता है इसका, आप इसको इजीली समझेंगे. हमेशा इससे फाइंड आउट करना होगा आपको FBI. ओके, सेकेंड रूल क्या है?
Second, right hand palm rule. Right hand palm rule. राइट हैंड palm rule कैसे अप्लाई किया जाता है? सपोज दैट दिस इज योर सपोज दैट दिस इज योर राइट हैंड, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ राइट हैंड palm rule क्या है? स्ट्रेच योर राइट हैंड palm such like thumb is perpendicular to remaining forefinger, and if tip of the forefinger directed towards the magnetic field and thumb indicates the direction of current or positive velocity of positive charge, then palm faces toward the force acting on that charge particle or that charge. Okay, so how can we summarize this? This is your force, this is your magnetic field, and this is your current. So F B I, it means the tip of remaining forefinger directed towards magnetic field and thumb indicates the direction of velocity of positive charge, velocity of positive charge or current, then palm faces towards the direction of force acting on that charge particle. The two rule is very important. With the help of these two rules, we can easily find out the direction of force acting on moving charge particle. So make your notes properly from the book. स्टेटमेंट आप लिख लेंगे यहाँ से और इसको ट्राई करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस पे हम कुछ जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Kindly mention here last 12 part 4. Okay. Definition of magnetic field. Our next topic is definition of magnetic field. Definition of magnetic field. Students, in your previous lecture, I had already told that the expression for the force acting on the moving charge in uniform magnetic field, what is the expression for the force? It would become out QBB sin theta. F is equal to QBB sin theta. With the help of this, we can write B is equal to F upon Q V sin theta. Q into V sin theta. If Q is equal to 1 coulomb, if the charge जो लिया गया है वो 1 coulomb का है, velocity of charge is 1 meter per second, and theta is equal to 90 degree. Theta is equal to 90 degree. तो वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आपको मिलेगा V इज इक्वल टू F अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 90, या आप लिख सकते हैं B इज इक्वल टू F, बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 1
सो 1 into 1 into 1 ये हो जाएगा आपका B is equal to F. So how can we define magnetic field? The magnetic field at a point is equal to the force acting on unit positive charge moving with unit velocity at right angle to the magnetic field. ओके, यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को. कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी एट विच एंगल? एट राइट एंगल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड. तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड at a point is defined as equal to the magnetic force. It is equal to the magnetic force acting on a unit positive charge moving with unit velocity at which angle? At right angle with magnetic field. This is your definition for magnetic field. Now we are going to discuss about the unit of magnetic field. इसको आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे वीडियो पॉज करके, और हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. What is the unit of magnetic field? Students, we know that force acting on the charged particle moving with velocity v at an angle of theta is equal to F is equal to q v b sin theta. From this we can write B is equal to F upon Q. B is equal to F upon Q into V sin theta. Now, if Q is equal to 1 coulomb, or we can write simply unit of V is equal to, what is the unit of F? Newton upon unit of charge coulomb, unit of velocity meter per second, and sin theta is unitless, तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम मीटर पर सेकेंड. यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर कूलम पर सेकंड को एक पास कर दीजिए मीटर. व्हाट इज द यूनिट? ये किसका यूनिट होगा कूलम पर सेकंड? तो आप देखेंगे I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T. I इज इक्वल टू Q अपॉन T, कूलम पर सेकंड. ये किसका यूनिट होता है? करंट का.
या इसको आप लिख सकते हैं 1 कूलम्ब पर सेकेंड को आप लिख सकते हैं एम्पियर में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। सो यूनिट ऑफ B is equal to Newton per ampere meter. Unit of B is equal to Newton per ampere meter. And यहाँ पे ध्यान देंगे 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम 1 टेस्ला भी करते हैं। तो टेस्ला इज अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि 1 टेस्ला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसको छोटे यूनिट में भी लिखते हैं। तो इसका एक और यूनिट होता है गॉस, और 1 गॉस बराबर होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ओके, इसको आप लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप नोट्स में मेंशन करेंगे। And if you have any doubt, then please mention your doubt in comment box and solve the problem given based on this formula. And इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।